Dear students, in our last lecture we have started studying about a new type of distribution which was been called to be as the normal distribution. But when we have started studying about the term normal distribution, in that what we have learned, what is a normal distribution is? Normal distribution, it is an example of a correct. It is an example of a continuous but a random variable. Correct. But who has given the idea of introducing the term normal distribution? Correct. De Moivre. But the theory of the normal distribution, it was been forwarded by correct. It was being when the normal distribution when it came into existence, they were based upon some assumptions. Tell me what were that some assumptions? The value of n is considered to be as very large, such that the value of n it becomes tends to infinity. Second, p, which is called to be as the probability of success, whether it is being considered to be as a small. Neither the value of p nor the value of q it is considered to be as a small one.
P and Q, they have been considered to be as fairly equal. P and Q, they have been considered to be as fairly equal, but are the same. Normal distribution rule. Later on, but it was been also called to be as a what is a graph of a normal distribution is? Correct. The graph is a bell-shaped curve, or it is also called to be as a symmetric curve. का मतलब बड़ा the normal distribution, it is also called to be as a symmetric distribution, in which mean is equal to what a median, and median but it is equal to mode. What is the use of the normal distribution is? ब्रीज बड़ा तू भी बोल कभी आंसर कब बोलेगा ब्रीज ब्रीज नहीं ब्रीज 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 चर्चिल it is being used to estimate the errors. How the errors are defined to be as एंजेलिना तू भी आंसर मत बोलना बेटा हाँ it is the difference between the बड़ा estimated value and the actual value. तो भाई मुझे बता errors they are also known as biases or they are also being called to be as
Chalo, very good. But errors can be either a positive or there can be correct. Very good. Formula which has been used. The device code. The probability density function. The probability density function. The probability density function of a normal distribution. It is being given by f of x is equal to 1 upon sigma into the root of 2 pi into e raised to minus x minus mu the whole square upon the 2 sigma square. चलो मुझे भाई लोग बताओ सब लोग what is the mu means. Sigma means बताओ what is x is what is root of 2 pi. X is a continuous random variable which can take any of the value lying between whatever, which can take any value which lies between minus infinity to plus infinity. Correct. Very good. And now सब लोग बराबर ध्यान से सुन लो बराबर सब लोग ध्यान से सुन लो by using this formula this formula we are not going to find the probability. We are not going to find the probability by using this given formula. We are going to obtain only the value of the parameters.
we are going to obtain the value of the parameters. Tell me, which are the parameters? Correct. And since the given normal distribution, it is comprising of the two parameters. Therefore, it is called to be as a correct. It is called to be as a biparametric distribution. अब ये देख तुम लोग को बड़ा मुझे यहाँ पे डाउट पूछना चाहिए था, पूछा नहीं तुम लोग ने मुझे। सर आपने अभी अभी हम लोग को ये बोला कि बाय यूजिंग दिस गिवन फॉर्मूला वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पूछना चाहिए था कि नहीं तुम लोग को? How we are going to find the probability? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Answer to that question is very easy. We are going to find the probability by finding the area under this curve. और लास्ट टाइम मैंने तुम लोग को विद रिस्पेक्ट टू कर्व काफी कुछ मैंने तुम लोग को बड़ा नॉलेज दिया था, राइट? चलो मुझे फटाफट आंसर दो। द टॉप ऑफ द कर्व इट लाइज द टॉप ऑफ द कर्व। चलो वेर इट लाइज मुझे बताओ। मैंने बताया था लास्ट टाइम, इट लाइज एग्जैक्टली अबाउट द मीन, बड़ा x इज इक्वल टू म्यू। चलो व्हाट अबाउट द टेल्स? पढ़ा नहीं है बेटा तुम लोग ने? मैसेज करो मुझे। डायग्राम देखो सामने है तुम लोग के। द टेल्स ऑफ द कर्व they can be बड़ा extended indefinitely from minus infinity to plus infinity. But we know that the tails they can't touch the baseline. Tails they can't touch the baseline. Neither the
लाइन्स कैन टच द मैडम टेल्स, उसके लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया था मैडम? The word is asymptotic. The word is asymptotic. तो मुझे ये बताओ मैडम, what is the total area under the curve is? Correct. The total area under the curve is 1. And that total area is divided into how many parts? Which are the 3 parts? Correct. 68%, 95.5%, 99.7%. अच्छा, जिसमें से बड़ा point of inflection बड़ा it contributes how much percent? Point of inflection बड़ा कितना कवर करेगा point of inflection मैडम? It will cover बड़ा about 68%. पता होना चाहिए मैडम. The curve changes from concave to convex when it passes from when it passes बड़ा from the point of inflection. Very bad बड़ा, तुम लोग को आता नहीं है सब. इसके ऊपर बड़ा ज्यादा थियरी है सब. सीरियसली बड़ा पढ़ाई करो सब. नवंबर में बड़ा एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, पता है सब लोग को? नवंबर 20 में इम्पोर्टेंट बड़ा एक इवेंट है, पता है कि नहीं सब लोग को?
तुम लोग ने वहां पे तुम लोग ने इंटरेस्ट रेट ऐसा बताया था तुम लोग ने हमें? ना जो वोटिंग है ऐसा तुम लोग ने दिया था इंटरेस्ट रेट करके, which is going to be बड़ा organized by ICAI. तो फिर चलो नेक्स्ट पॉइंट इज ए और अब यहाँ पे ना इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में three measures of dispersions they are being used, and that three measures of dispersions which are being used, they are quartile deviation, mean deviation, and standard deviation. Okay, this quartile deviation is to mean deviation is to standard deviation, but it has been found in a continued ratio to be as 10 is to 12 is to 15. Quartile deviation is to mean deviation is to standard deviation is equal to 10 is to 12 is to 15. तो अगर मैं सपोज यहाँ पे इक्वालिटी का प्रॉपर्टी यूज करूँ तो मुझे बताओ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी what will be the value of the quartile deviation? What will be the value of the mean deviation? And what will be the value of the standard deviation? करेक्ट। कंटिन्यूड रेशियो कब मिल सकता है मुझे बताओ। हम लोग ने रेशियो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो कंटिन्यूड रेशियो कब मिलेगा? है बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है तुम लोग के? तो कंटिन्यूड रेशियो जो है ना वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकता है जब पहले का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर अगर सेम है। फर्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर और सेकेंड रेशियो का न्यूमरेटर अगर सेम है तो ही रेशियो कंटिन्यूड मिल सकता है। चलो आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग for the several number of times but it was been found that mean deviation is equal to 4/5 times of standard deviation। या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं दैट इज mean deviation is equal to
0.8 times of standard deviation. मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझा? 4/5. इफ आई ट्राई टू डिवाइड द नंबर 4/5, तो बोल मुझे सेम आंसर ही मुझे मिलेगा, बराबर है। बट इंस्टीट्यूट जो है बड़ा, वो बहुत ही चालाक आदमी है बड़ा, बहुत ही चालाक। और ये देख, वो तुम लोग को बड़ा ये भी पूछेगा हाँ कि अगर मीन डिविएशन is 4/5 times of a standard deviation,